Hi bro. हेलो ब्रो, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली ਸਾਡੇ ਮੋਟੋ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲੋਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬ్రో, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, why RX 135? You have so much options in the market, and Yeah, you had older Suzuki also, Suzuki Yeah, Shogun. Shogun. So how come this? So first I got the Suzuki Shogun. I really don't know about two strokes. I got to know about RX100. It's a legendary motorcycle. So I got some knowledge about RX100. It's a good bike. So then I searched for RX100 and I haven't found a good motorcycle in good budget. So then one of my friends suggested me go for Suzuki Shogun. So then I thought this looks similar to Samurai. I thought the performance is also kind of Samurai, and said I don't want this motorcycle. So you just like take a test ride and then decide yourself. So then I got the motorcycle and I loved it, which produced 14 bhp and which is a high revving engine, which loves to be in the high revs. So I got the motorcycle, but I haven't checked any paperwork. Later on I did the same mistake again with my RXG also. What I see was I'm getting a motorcycle in a cheap price. So that's what I saw, and I got the motorcycles, and then I got to know about all the restrictions. I spent overall 1 lakh on both the motorcycles. On Suzuki Shogun itself I spent around 80k, and on my RXG I spent around 20 or 22,000. And so then I sold those two motorcycles. I didn't got the good price. So what I want to say to the audience is always check the documents, or else you just end up like me. I spent over 1 lakh and I got in the returns around 50k. So, but yeah, in the 50k I got a good motorcycle. I got this for 50,000, and this has the valid RC which was up to 2026. So I fell in love with the 135 because on a Suzuki Shogun you can't cruise on the top speeds. I mean it kind of love to rev, but it's not going to be in the rev for all the time. You just want a break. So I haven't faced any issue with the 135. If you put, and also I can install a 5-speed gearbox in it. So that's This is a 4-speed. Yeah, this is the 4-speed. बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੋਗਨ ਸੀਗੀ और RXG ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਰ ਪਾਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋ ਚਲਾਉਣੀ हैदराबाद 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਬਟ हैदराबाद 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਥੋੜਾ 100 ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਗਨ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸਪੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਈਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ? So the first thing what I did was getting the new tank. Basically this is not a new tank, this is a old tank, but not from this motorcycle. I got it in a second hand. Previous tank was totally rusted, it's not at all usable. So I got a second hand, a good well maintained tank, and I got painted it, and I got the new panels too. And I haven't got the brown color sticker, so I went for silver color sticker. So you can see that matches with the motorcycle too, with the engine color and the stickering. And I got a RD 350 handlebar, you can see right here. And I got the mirrors also. Previously it used to have a local handlebar, so I replaced with the RD handlebar. And I have also changed the fork oil seals. When I got the motorcycle, both the oil seals are gone, so I have installed the fork oil seals, replacing the oil too. And you can see I have installed the Pulsar 150 fork boots. So these will protect from the dust to protect the oil seals. And I have installed the luggage carrier, you can see at the back. So I have installed this, and I have installed the new toolbox too. And from the motorcycle I didn't got the cat silencer, so one of my friend gave this cat silencer, so I have removed the normal OG chrome silencer and I have replaced with the cat silencer. And I have done the basic carb cleaning and
engine oil flush and a new engine oil. So these pipes you have added. So, yeah, and I have added these transparent pipes. So basically, if you use a rubber pipes, they will break up very soon. So that's why I always use plastic pipes. And I've also added the 2T oil tank. I'll show you from this side. So you can see the meter also, analog, small analog kind of meter. Now the 2T oil tank was full. So I'm using the Shell Advanced 2T, and I've added this also. So currently my motorcycle is running on the 2T oil pump, and you can see I've added the filter too, petrol filter. Basically this comes from HGs and Javas, so I got it from my spare dealer and I've installed it. So how does this help? So whenever if some rust or something else come into this the fuel filter, the rust will go inside down there, and there is a magnet you can see, so that will attract all the iron deposits. And whenever if you have small particles, that will go at the bottom, so you can see always fresh fuel go to the carburetor from the top itself. Carburetor is stock or you got it aftermarket? This is a stock made in Japan carburetor. You can see it from that side. So you can see the carburetor too, it's written made in Japan right there. This is the stock carburetor. So ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कैट साइलेंसर कहते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਲਸਰ ਵਾਲੇ ਫੋਕ ਪਾਇਆ, ਆਰਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ 2T oil ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ। बेसिकली बेसिक जो कंज्यूमेबल्स होंगे वही चेंज किए, बाकी इंजन और थोड़ा कार्बोरेटर ओरिजिनल है जिन्नी उसे गड्डी उन्होंने स्टॉक ही रखी है। व्हाट इंजन ऑयल वुड यू रिकमेंड इन स्पेसिफिक ग्रेड and what is the service interval? So I use Motul 3040 which is 20W40 grade. You don't have to check it's a 4-stroke or a 2-stroke, you just have to check the grade. So the company recommended was the 20W40 grade, and I use the same 20W40 grade. So yeah, 20W40 grade oil. And what is the service cycle you follow for this? I'll change oil for every 5,000 kilometers. Okay. It's a 2-stroke. Basically your engine oil won't go into crankcase. So it would be cleaner for 10,000 kilometers too. There is not, only the gears are rotating with the oil. So you can change it for long intervals too for 2 strokes. Basically भाजी कह रहे कि ये लोग 20W40 वाला ग्रेड यूज़ कर दे जो रिकमेंडेड है यामा वालों, और मोटूल यूज़ कर दें, और 5,000 के आसपास ऑयल चेंज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब तो। उधर 2-स्ट्रोक गड्डी है उन्हें कोई फर्क पैंदा नहीं, बेसिकली गेयर के स्मूथनेस वास्ते ही फर्क पैंदा है, बट बेसिकली 5,000 के आसपास ही अपना सर्विस इंटरवल मेंटेन कर दें। तो while buying a 135, what should one look for? The first thing what you have to look for is the bore size, and whether bore is sleeved or a standard one. So basically we have to take off the bore and then check the size. Just you have to remove the head and just put the piston in the top dead center, I mean the bottom dead center. You just use with the kick, and you can see the ports. Okay. After looking ports, you can see whether it's a sleeved one or a non-sleeved one. And to know the size, you have to just remove the carbon from the piston head. Sleeve by means they add a small disc kind of stuff. Yeah, basically when your piston is oversized, I mean 1.5 2 mm. So if you want at oversize, you will lose your mileage and you will lose your reliability too. So that's why you have to be in the stock sizes. Under 1 mm is good choice. So make sure to get the motorcycle under 0.75, which was very good. So yeah, that's about the bore piston, and you have to check the bore piston. Other than that, you have to check everything in the 2-stroke motorcycles, but engine was the main thing, and you have to check the connecting rod sound. So if you have the connecting rod sound, then you have to rebuild the whole engine, because to remove the crank, you have to remove the whole crankcase and everything. And also mainly in RX, you will see the third gear slip issue. So whenever you want to buy the motorcycle, rev it in every gear. Put it in the first gear, go to its max. Go to in the second gear, go to its max, and just ride a motorcycle in high revs, so that you will get to know about the issues, and you can identify by just the sound. So checking the gears and the bores are the main things. To check for the first, you have to go check for this. You have to check for the paper. Buy a motorcycle with a valid RC, and make sure you transfer it on your name as soon as possible when you got the motorcycle.
make sure to transfer it onto your name as soon as possible. After transferring on your name, then you restore your motorcycle. Don't put any money up to you transfer on your name too. तो बेसिकली भाजी कह रहे हैं कि पेपर्स बहुत महंगे हैं गड्डी वास्ते जो भी इदा दी विंटेज गड्डी या कोई पुरानी गड्डी पेपर चेक करो कई बार की होंदा आरसी के अंदर कि मेरे को ओरिजिनल आरसी किताब वाली बट रिन्यू नहीं करती आजकल वो किताबों वाली आरसी नहीं चलती है चिप वाली आरसी चलती है ओरिजिनल आरसी फिटनेस थोड़े पोल्यूशन पासिंग और जितो तुसी खरीद रहे हैं ਉਹਦੇ नाम से होवे लाइक जे तुसी अमरदीप तो खरीद रहे हैं तो आरसी च अमरदीप होवे ना कि तरुण लिखा होवे क्योंकि वो आजकल की करते ऐसे बंदे बाइक्स तो लै लेंदे है बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होवे आ सब नहीं कराते पेपर्स लैके उन्हें कंसर्न नहीं होंगे पर जे थोड़ी गड्डी फड़ी गई तो फिर भुल जाओ गड्डी ने और थानू पता ही है नवा जो एक्ट है कितना स्ट्रिक्ट है चलान तो लगना ही है गड्डी भी तुसी उन स्क्रैप हो जानी है तां सब तो बेस्ट गल है सब तो पहले तुसी पेपर पुछो आरसी चेक करो उसकी फिटनेस चेक करो अप टू डेट है कि नहीं जिस तो खरीदे ਉਹਦੇ नाम से है कि नहीं फिर ही तुसी अगे गल बताओ वो इन्होंने कहा कि जो भी आ गड्डी लैनी है तो इनू फुल पावर तक पूरी टेस्ट करो जिदा फर्स्ट गियर से भजाना स्टार्ट करोगे फुल पावर तक टेस्ट करो जिस गड्डी गियर फस रहे हैं स्लिप हो रहे हैं गियर न्यूट्रल लग रहे हैं फिर समझ लो गड्डी से बहुत कम है और पिस्टन अपना जो है पिस्टन साइज 0.75 आइडियल साइज है उस तो ऊपर होना समझ लो गड्डी रिवर उबर हो चुकी है बहुत बार मतलब इधर तो स्टॉक इंजन मिलना बहुत मुश्किल है बट 0.75 के आसपास जो है गड्डी का इंजन बहुत अच्छा है How was your touring experience on this? So as you know, I hope previously I went for Maridimilli. It's up and down around 1300 kilometers. इन्होंने वीडियो देखो आप बाइक लेके इतनी 500 किलोमीटर दूर इतने गए हैं मारिडमिली बोल के जगह है ये तो 500 किलोमीटर उससे आप बाइक लेके गए तो प्लीज इन्होंने वो वीडियो जरूर देखो So with a pillion, my sister also came as a pillion and we have a lot of luggage so I have mounted over in the luggage carrier and the bike performed really good bro. I mean, first of all, I was very scared whether is there any piston seizure because I went. I thought there would be a seizure in between. I was very scared about it. But if you maintain a good 2T oil, I mean 2T oil ratio, you can ride it. First of all, I just gave a break for around 100 kilometers, and later on, I thought like the motorcycle is performing really well. So then I used to give break around 150 kilometers. So touring was on RX was really good, bro. You can, if you have a 5-speed gearbox, then it would be much more enjoyable because you can cruise at higher speeds. On this motorcycle, I have cruised around 70 kilometers per hour. But if you have a 5-speed gearbox, then you can cruise it around 85-90. Last question: when one gets into this category of bike, what should be the expectation and what you should not do with this bike? So first of all, just make them look like stock. Don't put the radium colors to the wheels and all this stuff. I mean, a lot of people do the porting stuff when they got into 2 strokes. Everyone will think that we'll port the motorcycle and we'll get more power like that. But that will definitely destroy the reliability of your engine. Never do porting. Keep it in the stock condition, and yeah, just keep it in the stock condition and ride it. And don't try to be a squid. A lot of people on RX particularly kind of going excited when they say big bikes. So just ignore that. That will creating a bad name for RX riders. So that's the only thing worry about. So basically भाजी कह रहे कि जो तुम इस टाइप की बाइक्स के अंदर बढ़ते हो तो पहली चीज़ है कि इंजन ओरिजिनल होवे पोर्टिंग रीबोर करांदे वो सब ना कराओ ना होवे आ भी चेक करो दूसरी गल है कि इनू बहुत केयर ना रखना है ठीक है गड्डी स्पीड पास भी या 30 साल पुराना इंजन आता है बट उस हिसाब ने थोड़ा प्यार ना भी रखना फिर ही उदा परफॉर्म करोगी रैश राइडिंग नहीं करनी है बहुत जने पागल मंगर रैश राइडिंग करते हैं मारते हैं एक्सीडेंट कराते हैं गड्डी बहुत बदनाम है इसलिए आ गड्डी मतलब बहुत इनफेमस है इस चीज़ की मतलब समझ लो जितना गड्डी से मारुति ओमनी किडनैपिंग वास्ते या यामा RX 100 बाइक से मारन वास्ते है बट आई है कि बट जो भी इधर पुरानी बाइक लैनी है आराम ना चलाओ अच्छी तरह मेनटेन करो इंजन चेक करो जे थोड़े किसी दोस्त को ऑलरेडी इधर की बाइक हैगी उन्होंने नाल लेके जाओ खरीदन टाइम और बाकी इंजॉय करो थैंक यू तरुण भाई फॉर योर टाइम No problem, bro. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तरुण's मोटो गॉड चैनल इन्होंने चैनल है मोटो गॉड मैं लिंक पा दूंगा डिस्क्रिप्शन से 2 स्ट्रोक लेके मतलब नट टाइट करन तो लेके मेंटेन किदा करनी A to Z सारी गाइड है उससे बहुत अच्छा चैनल है प्लीज़ मेरे चैनल देखो सब्सक्राइब करो अच्छे कमेंट पाओ जो भी डाउट्स है ना तो डायरेक्टली जाके उस चैनल से पूछो रिस्पॉन्ड कर दे सब अच्छी गल है छोटे छोटे डाउट ये लोग बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर दिया
और मेरे चैनल ने प्लीज़ अपने दोस्तों ਨੂੰ वीडियो दिखाओ, शेयर करो इनू, पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखना साडे चैनल ਦੀ हेल्प बहुत अच्छी आंदी। थैंक यू सो मच। Please subscribe to the channel and click that bell icon. If you subscribe it, click that bell icon. थैंक यू ब्रो। Right, bro. मिलते हैं। थैंक यू ब्रो। अरे विल डू वन थिंग ना, while returning at I saw a place, we'll grab a breakfast as well. So I'll also do a vlog for you. Okay. Is that okay? Sure.